अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी का अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी सी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं, तो करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें, और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। मनीष जी, डिविजनल कमिश्नर ने ये तैयार किया था, प्रस्ताव किया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके और बकरवाला में रखा जाए, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको पास किया। उससे पहले ये एसडीएम के लेवल पे भी ये तैयार हुआ था कि उनका क्या विकल्प है, कहाँ पे रखा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी दिल्ली सरकार को रूप में नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फिर दिल्ली सरकार दिल्ली के मंत्रियों से नहीं पूछ रहे, मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर रहे, अचानक कोई एफआरआरओ की चिट्ठी आती है, उसके बेस पे एनडीएमसी को लिख देते हैं, फिर एक केंद्र के मंत्री जी कहते हैं, आवास मंत्री हैं जो कि हाँ बहुत बढ़िया है, फ्लैट दिए, आवास दिए जा रहे हैं, हम अपने तारीफ करते हैं सरकार की। फिर जब हम कहते हैं भाई चुनी हुई सरकार को तो पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे, फिर गृह मंत्रालय कहता है हमें भी नहीं पता, या हम ऐसा नहीं चाह रहे। तो फिर ये साजिश क्या हुई है, किसने की है, और किसके कहने पे की है, कौन लोग ये डिसीजन ले रहे थे और क्यों ले रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके वो भी लूप में थे, वो भी आप। मैं वही पूछ रहा हूं ना कि जब केंद्र सरकार भी कह रही है, अगर केंद्र सरकार का ये रुख है, पहले तो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, और फिर मैं तो स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा हूं। सर, आप ये जो फ्लैट वाली योजना है इसके विरोध में है, या फिर ये रोहिंग्या ही दिल्ली में नहीं होने चाहिए, आप इसके विरोध में है? नीति और विचारधारा क्या है? नीति और विचारधारा इस रूप में स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को किसी भी तरह के स्थायी निवास के लिए, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट है या इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो देश की नीतियों के खिलाफ देश में रह रहा है, तो उसके खिलाफ तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये तो दिल्ली पुलिस बताएगी ना कहाँ रह रहे हैं, ये केंद्र सरकार बताए कहाँ छिपा कर, ये तो आप अपने बेस पे पूछ रहे हैं ना। अभी तो दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि दिल्ली सरकार बार-बार ये कहती है कि हिमाचल में 6 महीने में हिमाचल का सीएम चेंज होने वाला है, गुजरात में 6 महीने में गुजरात का सीएम चेंज होने वाला है, या उसको पता चल जाता है कि उनका कौन सा मंत्री कब गिरफ्तार होने वाला है। उसके इतनी सारी नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस की सब कुछ इनपुट होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिप्टी सेक्रेटरी होम से लेके एसीएस होम तक, पीएम से लेके, यही तो मेरे लिए भी है। ऐसी इंटेलिजेंस इस मामले में एकदम से फेल रही है।
मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें पता चल जाती हैं, और ये इतना सीक्रेटली किया जा रहा था, तो क्या साजिश है ये? इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नॉन कश्मीरी भी वोट डाल पाएंगे? थोड़ा सर, रोहिंग्या पे एक सवाल है। सरकार MHA ने कल चिट्ठी में कहा कि दिल्ली सरकार जो प्रेजेंट लोकेशन है रोहिंग्या कैंप की, उसको डिटेंशन सेंटर घोषित करे और ये इमीडिएटली किया जाना चाहिए। इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स है? आर यू गोइंग टू डिक्लेयर? पहले केंद्र सरकार अपना रुख तो साफ करे। कल से कंफ्यूजन फैला रखा है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, नीचे अफसरों से कुछ करवा रहे हैं। पहले केंद्र सरकार इसकी पूरी जांच कराए, उसके बाद में ये कैंप, कौन सा कैंप चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये तो सब पुलिस के निर्णय है। यही तो हम पूछ रहे हैं। सर, बीजेपी कांग्रेस करे आज भी करा है। उन्होंने कहा कि उनको बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार मुहैया करा रही है और दिल्ली सरकार ही सब कुछ करवा रही है। उस पर आपका क्या? तो बताए ना कहां कहां रोंगे हैं, क्यों रख रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए हैं, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? And the AAP Party, they're holding a news conference questioning the Delhi government, the central government that is, on the confusion they claim on the issue of Rohingya shelters. We'll try and get the first BJP response to it as well. That was the AAP Party demanding an investigation, claiming that there could have been a case of conspiracy, saying they weren't aware of the shelter. Hardeep Singh Puri, Union Minister, had put out a tweet talking about a shelter, and the Aam Aadmi Party now responding. In fact, they held a news conference yesterday as well, and after the letter that was shown by the centre putting out facts of the case, the Aam Aadmi Party saying Delhi government wasn't aware of the decision, or wasn't aware of the request. And this is a big allegation, saying that there is a conspiracy, there could be a conspiracy behind the letter that was written asking for a shelter. Whose conspiracy was it? Did the Delhi government really not know? Did they really not know about shelters for Rohingyas? Because yesterday, all of yesterday, they said the centre had approved, had constructed the shelter for Rohingyas, claiming that Pakistani Hindu refugees were still left in the lurch, living in pathetic conditions, and Rohingyas were being given shelters, and there's been a lot of anger. Shehzad Poonawalla joining us on the phone line. Shehzad Poonawalla of the BJP spokesperson. Shehzad, is it possible that the Delhi government really didn't know? The allegation is that they did not know. They claim there's a conspiracy. Shehzad, the Aam Aadmi Party claims that they had no idea. They had no idea. They said, we don't know who wrote the letter. They're claiming it could be a conspiracy. They're saying we didn't know. Is it possible they really didn't know about this? See, the Department of Home, Delhi Sarkar, which the government does it come under? It comes under the Delhi government. The second factor is that the DM, whom does the DM report to? The Delhi government. So, now for them to say that when this letter has come out, and it is clear as daylight that the Delhi government wanted to actually shift these Rohingyas to EWS flats and wanted to give these flats meant for the people of India to the Rohingyas because of vote bank politics. And apart from that, please see when the Rohingyas were being removed from Madanpur Khadar's land of Uttar Pradesh government. At that time, Amanatullah Khan, it is a Republic report. You can check the Republic report. It was a Republic report that Amanatullah Khan told Republic Channel that these people are not a national security threat. They should be given the residence. They should be given the facility. Secondly, I can tell you for a fact that the Delhi government has provided rations to these Rohingyas during the COVID lockdown. The Delhi High Court was told in an affidavit by the Delhi government, and at the time when people of Delhi were not getting rations, the ration cards have not been given to poor of Delhi. Rohingyas are getting rations meant for the people of India. All of these have been reported by Republic. I would request you to go back to your reports and tell us that why this Aam Aadmi Party has such Rohingya prem. And it's not just Rohingya prem. They come out in defense of ISIS terrorists. Amanatullah Khan defended ISIS terrorists. They've come out in defense of Tahir Hussain. They've come out in defense of all kinds of elements who are radicals. So this, in the name of vote bank politics, this is the true face of the Arvind Kejriwal government. They are not Kattar Deshbhakt. They are Kattar corrupt, and they are Kattar देशभक्ति के साथ and देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग. Yeah.
But so that's really baffling that, they say that it could be a conspiracy. I mean, what conspiracy are they talking about? Yeah? Niranjan, I request you, I don't remember the exact date, but the Republic has an exclusive interview of Amanatullah Khan, where he has come out and said that these 50-odd Rohingya families which are being pushed out of Madanpur Kadar are not a national security, and that the BJP government, because they are Muslims or some logic he has given, that because of that we are targeting them. I request you to please pull out that video and put out in defense and ask Mr. Manish Sisodia and Kejriwal that is Amanatullah Khan from the BJP. He's from the Aam Aadmi Party. He's an MLA. He is defending Rohingyas. Also, the Delhi High Court has been told in black and white by the Delhi government that we are providing sufficient food to Rohingyas. Don't worry about these Rohingyas. We are providing them food. They will not be hungry at all. Whether they give to a common person of Delhi or not, doesn't matter. But Rohingya ka peet bhar ke khana de rahe. This they have said to the Delhi High Court. I request you to pull both these reports of Republic out and put it in the public domain and ask Mr. Sisodia that who is the true patronizer, the hand that patronizes the Rohingyas. Okay, let's see. We'll try and ask that question as well. Shehzad Poonawalla, thank you for joining us. The first response to the BJP after the Aam Aadmi Party claimed that they had no idea about the Rohingya shelter. Meanwhile, there is a debate. Now, as people talk about the possible Rohingya shelter, there's a political debate, a political fight around it. But what about and this is the question that people are asking, what about the Pakistani Hindu refugees? The Pakistani Hindu refugees who've been here, the Hindu refugees who crossed over from Pakistan, who came back, they're living in pathetic conditions. My colleague Piyush sent us a report from the national capital on the conditions under which they are currently living in the national capital. Take a look. While there are now reports that are emerging of how the Rohingya refugees that had come from Myanmar and Bangladesh to India are going to be accommodated by giving them accommodations, what often gets forgotten is the plight of Hindu refugees that had come from Pakistan to India. I'm reporting from one such refugee camp here at Majnu Ka Tila in Delhi, where over 150 Hindu families that had come from Pakistan to India in 2012. But still, if you can see over here, the difficulties and the ordeals that are being faced by these families. Most of these families are financially quite weak, and they are still finding it very difficult to make their ends meet. Despite this, they are quite hopeful. They are very hopeful. They are hopeful about being accepted as Indians, something that has been denied to them now for more than 10 years. In 2019, there was a hope. Then the government passed the CAA bill that, there is going to be an improvement in their conditions. But yet, despite 3 years, there has been no improvement in the conditions, and they are still waiting for the citizenship. When you talk to the families over here, they are hopeful about the country, but yes, they have this complaint and they have these grievances that they are not being accepted as Indian citizens. You can understand, as you can see the visuals over here, that what is the state of affairs over here. They are financially very weak. It is difficult for them to make their ends meet, but yet they are hopeful. They are hopeful about this country. They are hopeful that the government is going to step in and going to help in improving the situation. They are making, though they have expressed their hope with the government, they are resilient people, and they are in their own way trying their best